Now we are going to learn manipulating windows. What do you mean by manipulating windows? Manipulating windows means the size of the windows on the screen that we can change. So how can we change? With the help of these three buttons, we can manipulate the window. Minimize button. This is called a minimize button. Minimize button is used to minimize the window. Maximize button is used to maximize the window. And close button, it is used to close the window. How it is working? So one by one we will learn. Minimize, maximize and resize. That means suppose if minimize, maximize, I think it is clear. I will show you with the help of an example, then it become more clear. See, this is our PowerPoint window screen, you can see. And here at the top, see, minimize window is there, close button is there. Suppose if we are clicking minimize button, then what will happen? See, my window it is minimized. Minimize करके automatically वो task bar में आ गया. अब उसको फिर से क्लिक करेंगे तो उस आइकन को क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा? मिनिमाइज बटन नाउ चेंज इनटू मैक्सिमाइज बटन होगा. फिर उसको क्लिक करने पर वो विंडो मैक्सिमाइज हो गया. आई थिंक इट इज क्लियर. Then another one is resize button. This is called a resize button. So this is used to resize it. See, उसको resize करने के लिए, size change करने के लिए. See, you can change the size. This way you can adjust the size of your windows. Clear? उसको resize कर सकते हैं. फिर वापस लेके आना है तो again click maximize button. Maximize button को click करो तो वो maximize पूरे entire screen को cover करेंगे. So these are the three buttons: minimize, resize, close. Then once we will click this resize or restore, then what will happen? Automatically maximize button active हो जाएगा. फिर maximize को click करो तो वो maximize हो जाएगा. So I think it is clear. Next, using computer folder. So you can see my computer icon. Yeah, computer icon. This computer icon is there on the desktop, है ना? So इस icon का use क्या है? What is the use of this icon? It displays the content of floppy disk, hard disk, CD-ROM, network drive. ये सारे contents को वो display करते हैं. तो that means आपके कंप्यूटर में क्या क्या है, कितना ड्राइव्स है, उसके अंदर क्या क्या डेटा, क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स है, everything we can display with the help of my computer icon, my computer folder. Next one is Windows Explorer. What is Windows Explorer? So Windows Explorer means it is a file manager. Mainly it is used in Windows operating system. It allows the user to manage files and folders and network connections. Same my computer icon का सेम पर्पस है, लेकिन इसका डिस्प्ले का कुछ डिफरेंट मेथड्स है, डिस्प्ले का स्टाइल थोड़ा डिफरेंस है. सो उसमें so many pans are there. Navigating pan is there, detail pan is there, so to show the detail view. Preview pan is there to show the preview of the screen. Library pan is there, so it will arrange in files and folders in library pan. Then toolbar is there for changing the style. Then address bar is there. This address bar it is used to navigate particular files or folders को address open करने के लिए address bar is there. Then search box is there. With the help of search box you can search any particular files or folders. See how it is working. I will show you with the help of an example. See, normally Windows 10 में Windows Explorer के जगह पे File Explorer है. See, File Explorer open किया. Now, see, this is called a navigating pan. With the why it is known as navigating pan? If you will click on any icon, see, आपके सारे कंप्यूटर का सारे files and folders को navigate करना easy है with the help of this navigating pan. Suppose if you want to go to USB, then just click navigate करना easy है. USB में click करो तो उसका पूरा content जो है detail pan में इसमें आ जाएगा. Clear? USB का. Suppose if you want to see that D drive, D में click करो, see D का सारे options it will display here. So this left side, this option is called a navigating pan. This see here in the view we can see navigating pan अभी open है. Library pan is also there. See, you can close it. Library pan. If you will open, if you want to see it, just open it, है ना? Library pan. Show libraries. Then it will show the library.
सी लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में सब कुछ अरेंज करते हैं ना ऑर्डर वाइज, सेम वे library with the help of library pan, all that files and folders it will arrange in the library pan. Just click library, see आपके कंप्यूटर का पिक्चर्स को पिक्चर फोल्डर में, सेव्ड पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो you will get all the documents which is arranged in your computer. That is library pan. Now detail pan, how can we see that detail pan? See, this is called a detail pan. इसका डिटेल्ड व्यू दिखाते हैं डिटेल पैन में. फॉर एग्जांपल सपोज यू आर सेलेक्टिंग एनी फाइल, उसका डिटेल्स इट विल शो इन द डिटेल पैन. सी अनदर डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, सी उसका डिटेल्स, वो कब उसका टाइटल क्या है, कब क्रिएट किया था, ऑथर कौन है, कब मॉडिफाई किया था, है ना, लास्ट प्रिंटेड कब है, फुल इंफॉर्मेशन इट विल शो हियर इन द डिटेल पैन. आई थिंक डिटेल पैन इज क्लियर. The next is preview pan. See, preview pan में क्या होता है कि इसका प्रीव्यू दिखाएंगे. That means उसके अंदर का कंटेंट दिखाएंगे. सपोज एक फाइल और फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे तो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, USB ड्राइव में देखते हैं, सी क्लास 1, इट विल बिकम इजी. सपोज टाइपराइटर फाइल, उस फोल्डर के अंदर का फाइल्स को सेलेक्ट करना होगा. फर्स्ट यू हैव टू सपोज सेलेक्टेड दिस फोल्डर, दिस फाइल, देन व्हाट विल हैपन, इसका detail view it will display. See, typewriter PPT of selected है, उसका detail view यहाँ पे you can see the detail pan में उसका detail view दिखा रहा है. See उसमें क्या क्या है, उसका contents क्या है, just scroll करेंगे तो उसका content का एक look you can see from here also, detail view you can see. Same way अगर document file click करेंगे तो उसका detail, उसके अंदर में क्या क्या content है, that detail view you can see in the detail pan. I think it is clear, detail pan. So library pan, preview pan, detail pan, everything it is clear. Then now we will close the detail pan. Preview pan close करते हैं, ठीक है, detail pan already closed है. Now this is called the address bar. See here address bar में directly जो चाहिए वहाँ पे directly you can navigate with the help of address bar. Address bar is used to navigate different files and folder. So यहाँ पे navigate pan use करके भी navigate कर सकते हैं. With the help of address pan also you can navigate. I think it is clear. Then next what it is, search box. Okay, search box, you can see that search box over here, है ना. search box में अगर एक फाइल और फोल्डर सर्च करना है, so you can click that name in the search box. Suppose टाइम टेबल, मेरे कंप्यूटर में टाइम टेबल कहाँ पे है, इस फाइल कहाँ पे सर्च किया, सी टाइम टेबल कंटेंट वाले सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स, सारे फाइल्स ओपन किया. So the search bar is used to search a file or folder. So in this way we can easily we can explore our files with the help of this file manager या Windows Explorer. I think it is clear, Windows Explorer, all the options. Okay, now let us come back to our PPT. So search box, everything it is clear. Now next comes control panel. What is the use of control panel? Control panel, it is mainly used for making changes in the settings of the window. Window का settings में अगर कुछ change करना है, then you can use the control panel. So control panel, what all settings we can change? Like suppose if you want to add a hardware या software component, control panel में add and remove कर सकते हैं. सेटिंग ऑफ यूजर अकाउंट का सेटिंग चेंज करना है, उसका पासवर्ड अकाउंट्स का सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं. रिमूव हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, दैट आल्सो वी कैन डू. डेट एंड टाइम का सेटिंग चेंज करना है, वी कैन डू. डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना है, कीबोर्ड एंड माउस सेटिंग चेंज करना है, all these things we can change with the help of, we can do all these settings with the help of control panel. I think it is clear. Next is locating files or folders. To locate a files or folders, एक तो हम Windows Explorer में जाके करते हैं. Another method is suppose if you want to search any file or folder, you can use the search button. Here it is called the search button. So task bar में ही मिल जाएगा, start button के just पास एक search box से, with the help of this search box we can search files or folders. Type the name and then click on search. Automatically वो search करेंगे. नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए फोल्डर. हाउ कैन बी क्रिएट ए फोल्डर? उसके पहले व्हाट यू मीन बाय फोल्डर? फोल्डर मीन्स इट्स
location where we can store file. So how can we create a folder? 3 steps are there. Go to the location where you want to create a new folder, then right click at the blank area, then click the new option, then click the folder, then type the name, then that folder it will create automatically. I will show you practically how to create a folder. Suppose here I want to create a folder. So here folder means, see, this one is so many folders you can see here on the desktop. CBSE, this folder is there. And folder means inside that so many files are there. That is called a folder. See, folder को double click करने पर उसके अंदर सब folder भी हो सकता है और उस सब folder को double click करने पर you will get the files. So how can we create our own folder? Suppose I want to create a folder in the on the desktop. तो उसका blank area में click किया, right button click किया. Now click on the new option में click किया, folder में click किया. So folder में school नाम के एक folder create करना है. So now type the name of the folder, school type किया. Just press the enter key. तब क्या हो गया? That folder it is created. In this way we can create a folder. अब इसके अंदर files store करना है तो उसको double click करके उसके अंदर files you can automatically store. Copy paste करके डाल सकते हैं. I think it is clear creating a folder. Now let us see our next topic is deleting a file or folder. How can we delete a file or folder? To delete a file or folder, first you select the file or folder which you want to delete, then click the right button, then क्या करना है? Then click the या तो delete button click कर सकते हैं या तो click the delete option या तो just directly move to the recycle bin. Then it will be there in the recycle bin. If you want to restore from the recycle bin, you can click the restore option. Yeah, permanently also you can delete it with the help of shift key. I will show you practically. See, this folder we already created. उसको delete करना है. Right click किया. Then delete option is there. Select the delete option. तो वो delete हो गया. See, it is deleted. Deleted folder automatically there in the recycle bin. Recycle bin में click किया. If you want to restore it from the recycle bin, what to do? First you select that folder. Where is that folder? School था ना? School name का folder मिल गया है ना? Right click करो, फिर restore में click करो. Then what will happen? Automatically it will restore. Restore means जहाँ दे वहाँ पे रख देंगे. See, you will get the school folder here है ना? अब another method क्या है? उसको select करो, फिर क्या करना है? Simply select it and then click the या press the delete button from the keyboard. Keyboard use करके भी delete कर सकते हो. ठीक है? या तो फिर दूसरा method है show drag and drop it there in the recycle bin. Recycle bin में automatically drop करो. अब वो automatically recycle bin में आ गया. Now you can suppose if you want to restore it again, select किया, right button click किया, restore में click किया, तो वो restore हो गया. Now permanently delete करना है, तो क्या करना होगा? इसको select it, then shift key press करना. Shift key press करते हुए आप क्या कर सकते हैं? Delete option को click करना. तब वो क्या करेंगे? It will show you a message. Are you want to permanently delete this folder? If you will click yes, then you cannot restore it because it will not go to the recycle bin. Recycle bin में नहीं जाएगा. Permanently वो delete हो जाएगा. In this way, we can delete a files or folders. I think it is clear deleting file or folder. Then next, the last portion is renaming a file or folder. How can we rename it? So for renaming a file or folder, same method, just click the file or folder, then press the right button and then type the new name. Then it will automatically rename it. Okay. Let me show you practically how to rename a file or folder. Suppose a teacher's timetable है, इसको simply इसको rename करना है. So select it, फिर क्या करना? Right button click करो और rename option को click करो. Suppose उसको सिर्फ timetable टाइप किया, एंटर की प्रेस किया, तब क्या हो गया? रीनेम हो गया. So in this way we can rename a file or folder. I think it is clear. So thank you students. Practice it. If any doubt, you can text me.